इलेक्शन केमिति हुए एबे तमे गोटे जिंस जानिछो इलेक्शन भारत वर्ष रे कहिले आमे एमएलए आ एमपी इलेक्शन को जानिछु जो थे कि डायरेक्टली आमे लोक कौन करंती से कैंडिडेट को वोट करंती किंतु प्रेसिडेंट को इलेक्शन कोन सेमति हुए ना आमे तो केही डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट करिनो तार अर्थ कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन नंबर 1 पॉइंट होची इनडायरेक्ट इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन रो अर्थ कोन कि सिटीजन माने काहा को वोट करचंती से माने तांकर रिप्रेजेंटेटिव को वोट करचंती अब रिप्रेजेंटेटिव काहा को वोट करिवे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट करिवे सो अल्टीमेटली सिटीजन आर दे आर नॉट डायरेक्टली वोटिंग टू प्रेसिडेंट तो सिटीजन भाया रिप्रेजेंटेटिव से माने वोट करचंती सेथि पई एटा को हम कोन कहिबा इनडायरेक्ट इलेक्शन बोली हमें कहिबा अच्छा तो एबे जेहेतु मु कहिली कि रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंटेटिव माने एठी पार्टिसिपेट करंती सेटा भी गोटे इंपोर्टेंट ओके को रिप्रेजेंटेटिव नंबर 1 होची हमर ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट जोडा हम पढू छी वर्तमान ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अर्थ जेते सब इलेक्टेड मेंबर्स अछंती ऑफ पार्लियामेंट माने बोथ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा आउ किए पार्टिसिपेट करंती आउ किए रिप्रेजेंटेटिव्स अछंती आउ अछंती तमरो ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट legislative of the state legislative assemblies है ना अपने इलेक्टेड एमएलए माने वोट करिवे आउ के वोट करिवे आउ वो वोट करिवे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ legislative assembly ऑफ यूनियन टेरिटरी की अछि हमर गोटे रहला दिल्ली आ गोटे होला पुदुचेरी किबा पौंडीचेरी ओके सो एठी तमे कोन जानो देखो प्रीलिम्स रे डायरेक्टली क्वेश्चन आसे कि हु पार्टिसिपेट इन द मु कहिबी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आमे कोन जानले कि आमे तो डायरेक्टली वोट करूने तो आमे जो रिप्रेजेंटेटिव को जितेइचे से रिप्रेजेंटेटिव माने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को वोट करंती तले को रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करंती इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट elected members of state legislative assemblies and elected members of legislative assemblies of the union territories देखो एबे जदि क्वेश्चन पचारिबो कि who do not participate who do not participate साधारणतः एग्जाम रे ए क्वेश्चन सुडा आसे डायरेक्टली आसे ने ठीक है इनडायरेक्टली आसे माने को रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट करंती नाही तो एठू हमें कोन जानले देखो केमिति जानिबा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट माने केवल इलेक्टेड मेंबर किंतु तमे समस्त जानिचो लोकसभा एवं राज्यसभा रे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी अछंती तार अर्थ किए पार्टिसिपेट करंतनी नंबर 1 होची नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बुझिला सो किए पार्टिसिपेट करंती केवल इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करंती किंतु नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से माने नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रो अर्थ कि बो हमरो होची कोन लोकसभा एवं राज्यसभा रो जो माने नॉमिनेट हुआंती पूर्व जेमते लोकसभा रे दुई जण एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेट होतले एवं राज्यसभा रे तमरो पूर्व कोन थिला लोकसभा रे दुई जण एंग्लो इंडियन कम्युनिटी और राज्यसभा रे एबे भी 12 जण नॉमिनेट हुआंती तो से माने दे आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट फॉर द इलेक्शन ऑफ द
प्रेसिडेंट से भले आगु जीवा देखिबा देन हमर आउ किए पार्टिसिपेट करंतनी एटी कोन लिखा है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ व्हाट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज अर्थ कि संपूर्ण रूपे जो हमर स्टेट रो किछि किछि स्टेट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी अछि ता माने एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दे डू नॉट वोट ओके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दे डू नॉट वोट आउ के वोट करिवनी स्टेट तरफ रु एडी कोन दरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ता माने नॉमिनेटेड एमएलए जो माने हेतिवे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज दे आल्सो डू नॉट वोट okay they also do not participate in the election similarly एठी के रहइबो एठी इलेक्टेड मेंबर्स अछि सिमिलरली नॉमिनेटेड मेंबर्स they do not participate in election so students जेमति मु कहिली तुमको ए जिंस टिके मन रखिबो बिकॉज़ क्वेश्चंस डायरेक्टली आसे who do not participate प्रीलिम्स रे आसीबार संभावना अछि ए भलिया क्वेश्चन सब तो मु तुमको कोन कहिली कि प्रथमे मु तुमको बुझेइली कि इनडायरेक्ट इलेक्शन रो अर्थ कोन कि आमे सिटीजन आमे वोट देलु हमरो निजर रिप्रेजेंटेटिव्स को एमएलए एमपी एमएलसी जहां भी हो एंड से माने कोन करिवे प्रेसिडेंट को वोट देबे बट को रिप्रेजेंटेटिव एलिजिबल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एवं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज किए पार्टिसिपेट करंतनी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे डू नॉट पार्टिसिपेट nominated members of the MLA, the Legislative Assembly, they also do not participate. Among member of legislative councils, say nominated who? Either it is nominated, okay, nominated or elected. Here be they do not participate. तमाने संपूर्ण रूपे legislative council eligible नुह. आउ के participate करिवेनी हमरो union territories रो election इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करिवे बट नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करंती नाही ये होची तमरो कोन कि द मेंबर्स विषय हमें जानिले एबे हमें जानिबा कि जो इलेक्टेड मेंबर्स माने वोट देबे समस्त जमे जानिचो कि हमर जो ज्योग्राफिकल लोकेशन हिसाब रे ज्योग्राफिकल लोकेशन हिसाब रे पॉपुलेशन भी अछि राइट जेमती ओडिसा रा पॉपुलेशन यूपी रा पॉपुलेशन तुलना रे कंपैरेटिवली कम रहिबो एवं एठु हम कोन जानि छै पॉपुलेशन हिसाब रे एमपी एवं एमएलए भी डिपेंड करे एबे यूपी रु नंबर ऑफ एमएलए यूपी रा नंबर ऑफ एमएलए अधिक ओडिसा रा नंबर ऑफ एमएलए कम थिबो से भले यूपी रु पार्लियामेंट को नंबर ऑफ एमएलए अधिक थिबे बिकॉज़ डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन तो जदि सारा राज्य जिते सारा राज्य अछि हम भारत रे सब गुडा राज्य रो एमपी और एमएलए रो नंबर्स गुडा सेटा अलग अलग अछि यार अर्थ वैल्यू ऑफ वोट कोन हबो माने जणे जदि गोटे वोट कास्ट कला हम जदि खाली से नंबर रे गणति करबा कि 1 2 3 4 एमएलए कि एमपी वोट कले एवं सेही हिसाब रे हमें जेतरा वोट तांको अधिक मिलछि हमें सेती करदबा सिमिति काउंट हुएनी एठी नंबर ऑफ वोट काउंट हुएनी एठी कोन काउंट हुए स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ वोट काउंट हुए वैल्यू ऑफ वोट नाउ वैल्यू ऑफ वोट रो अर्थ कोन कि गोटे एमएलए जदि गोटे वोट दोउची तार वैल्यू केते गोटे एमपी जदि तार गोटे वोट दोउची तार वैल्यू केते आसो जानिबा कि वैल्यू ऑफ वोट ता कैलकुलेट केमति हुए ओके वैल्यू ऑफ वोट ता केमति कैलकुलेट हुए प्रथम जिंस होउची वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए केमिति हुए गोटे एमएलए कर वोट रो वैल्यू हमें केमिति कैलकुलेट करबा प्रेसिडेंट को इलेक्शन पई इट इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन कहारो एमएलए कहारो राज्य रो हबो तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय ओके टोटल नंबर ऑफ एमएलएस बुझी पारछो तार अर्थ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स एबे हमर स्टेट रो जते टोटल पॉपुलेशन आउ एतिकी टोटल एमएलएस अछंदी
गोटे एमएलए ର value କେମିତି ପାଇବା total population of the state divided by total number of MLAs multiplied with 1000 এটা তଳେ ଅଛି ହଁ ତା ସାଥିରେ ନାହିଁ multiplied by 1000 so this is the value of vote of MLA तो गोटे MLA ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦବ ତାର value ଟା ଆମେ କେତେ calculate କରିବା total population ଆମେ ଯଦି ओडिसा ର गोटे MLA କରିବା ତାହେଲେ ओडिसा ର total population ଯେତିକି divided by total MLA କେତେ ଅଛନ୍ତି ओडिसा ର multiplied with 1000 ओके मन रखिबो सेमती वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ये कौन हो जानिबा टिके नाउ जेतेबेले एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करंती तांकर वैल्यू टा केमिति जानिबो तांकर वैल्यू जानिया पई टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ देखो एमपी कहार एमपी स्पेसिफिकली आम कहि परिबेनी जेहेतु मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरा देश पय रिप्रेजेंट करिवे डेफिनेटली एमपी गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी रो बिलोंग करे किंतु पार्लियामेंट ता पूरा देश रो ओके तो एठी हमर केमती कैलकुलेशन हो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ओके वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ व्हाट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स सबु गुडा राज्यर समस्तंक एमएलए तांकर जेते वैल्यू ऑफ votes अच्छी total divided by total number of elected MPs बुझी पाछो सो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी गोटे एमपी रो वैल्यू ऑफ वोट केमते कैलकुलेट करबा जेते सारा राज्य अछि सबु राज्यर एमएलए मानंकर वैल्यू ऑफ वोट को हमें ऐड कर दवा ता सहित हमें डिवाइड करबा कि इलेक्टेड एमपी नॉमिनेटेड नुह हमर पार्लियामेंट रे इलेक्टेड एमपी केते जण अछंती से लोकसभा हो किबा राज्यसभा हो ताको हमें काट दबा सो दिस इज द फार्मूला वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए एवं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ओके तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए एवं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी सो एई माध्यम रे हमें प्रेसिडेंट कर कोन करछे हमें तांकर कैलकुलेशंस करूचे इलेक्शन पय आउ डिके जानिबा विषय रे देखो प्रेसिडेंट कर जो इलेक्शन टा हुए सेटा डायरेक्ट जेमति मु कहली केमति नुह जे हमर नॉर्मल इलेक्शन केमति हुए सपोज एमएलए जने छिडा हेची दी जण छिडा हेचंती गोटे गोटे जणे व्यक्ति भोट कला माने गोटे भोट रे गणति हैला तो जा को अधिक भोट मिलिची ताकू सीए जीति जीवो सेटा होची नॉर्मल प्रोसीजर रे इलेक्शन हुए बट प्रेसिडेंट को इलेक्शन से बळा हुए प्रेसिडेंट को इलेक्शन केमति हुए इट इज अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ proportional representation बुझी पाछो सो एबे टिके पूर्व जो कहले कि वैल्यू ऑफ वोट कैलकुलेट करिवार मेन ऑब्जेक्टिव होची सेया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल votes okay so proportional representation by the means of single transferable votes तार अर्थ एठी जेतबेले हमर प्रेसिडेंट कर जो भोट आमे करूचे प्रेसिडेंट कर भोट रे एई माध्यम रे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माध्यम रे गोटे जे व्यक्ति जितिबे से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रे जिति परिबे किंतु इंटरेस्टिंगली एठी गोटे कोटा भी अछि कोटा भोट्स एठी गोटे कोटा अछि माने गोटे प्रेसिडेंट को सेई टक्कर दबा पई माने एलिजिबल हबा पई भी गोटे मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स तांको सिक्योर करया को पड़िबो गोटे फिक्स्ड कोटा अछि ओके कि सेई कोटा जेतबेले सी क्रॉस करिवे तेबे ही जाय कि सी वैलिड एलिजिबल हे जिवे नै तांकर वोट गणति पई जदि से कोटा ही पार करि परिबनी सी एलिजिबल हे परिबनी सो से कोटा हमें केमति कैलकुलेट करबा हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्टोरल कोटा जोटा से केते कोटा सेटा डिसाइड हबो केतेटा नंबर सेटा डिसाइड हबो कोटा एठी अछि कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स माने से व्यक्ति को जेतेटा टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स मिली छी डिवाइडेड बाय
divided by 2 plus 1. Okay, the total number of valid vote jette tanko total valid vote मिलिथिबो electoral quota divided by 2 plus 1. ये होची कोन, ये होची तमरो एतिकी कोटा तांको मिनिमम एतिकी अचीव करिया पड़िबो टू बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंटिंग. सो एठी कोन हो जते जण रिप्रेजेंटेटिव थिबे तांको गोटे गोटे कोन करा जिवो, तांको गोटे गोटे बैलेट पेपर दिया जिवो. ओके, तांको गोटे गोटे बैलेट पेपर दिया जिवो. आ बैलेट पेपर तांको कोहा जिवो कि तमे गोटे काम करो, तमे निजर प्रेफरेंस दियो. सेति में जो प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट लिखा है नि, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. सो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम एठी हुए. प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम रे कोन अर्थ कि गोटे व्यक्ति को, गोटे एमएलए किबा गोटे एमपी को, इलेक्टेड एमपी को से माने कोन करिवे, गोटे पेपर दे देले तांको कहिबे सपोज देयर आर 4 कैंडिडेट 1 2 3 4 5 पांचटा कैंडिडेट असंती. ओके, आ पांचटा कैंडिडेट रो सपोज ना अछि ए बी सी डी ई. ओके, सो सीए जो एमपी नंबर 1 सीए कहिबो जे नाइ मु मोर जो प्रेफरेंस मु केमिति देबा पय चाहूची, मु चाहूची मोर प्रथम प्रेफरेंस मु डी को देबी, द्वितीय प्रेफरेंस मु बी को देबी, तृतीय ए को देबी, चतुर्थ सी को देबी, आउ देन मु ई को देबी. सपोज एमपी नंबर 2 किबा एमएलए नंबर, इलेक्टेड एमएलए नंबर 2 कहूची कि नाइ मु प्रथम प्रेफरेंस ए को देबी, द्वितीय देबी ई को, तृतीय बी को, चतुर्थ सी, पंचम डी. सो याकू कहा जे प्रेफरेंस, माने आमे डायरेक्टली खाली गोटे कैंडिडेट को आमे वोट दबानी. आम पाखे जिते जन कैंडिडेट छिड़ा होइतिबे सब कैंडिडेट को आमे प्रेफरेंस हिसाब रे वोट दबा कि मु काहाकू से जो इलेक्टेड एमपी कि इलेक्टेड एमएलए काहाकू को प्रेफरेंस रे रैंकिंग रे से रखिया पे चाहउछंती तांको हिसाब रे. सो एबे हमें कोन जानिबा, एबे हमें जानिबा कि जदि माननियो कि फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई जो पांच जन जे छिड़ा होइछंती इलेक्शन पय, ता भितर गोटे व्यक्ति एमती अछंती जांको अधिक प्रेफरेंस अधिक लोक कोठु मिली छि. आउ सी एक कोटा जोटा मु कहली इलेक्टोरल कोटा, से कोटाटा को भी क्रॉस करिसंती. कोटा क्रॉस करिके तांको सबुटो अधिक प्रेफरेंस मिली छि. आ जेतोळे तांको अधिक प्रेफरेंस मिली छि सी कोन हेबे, सी हेबे विनर, माने सी अल्टीमेटली प्रेसिडेंट पय सी इलेक्शन हे जिवे. सो ये होची तमरो संपूर्ण कांसेप्ट related to election of the president of India. How the election of the president of India happens, मु तुमको डिटेल भाबरे तुमको मु विस्तार रूप रे मु तुमको कहिली. एबे आ गोटे भी जिंस भाबिनियो कि कोनोसी प्रकार जदि डिस्क्रिपेंसी हैला इलेक्शन रे, जदि कोनोसी प्रकार डिस्क्रिपेंसी होची इलेक्शन रे, केवल सुप्रीम कोर्ट ही इंटरवेन करि परिबो, हाई कोर्ट एथरे इंटरवेन करि परिबो नाही. बुझि परछो, सुप्रीम कोर्ट जदि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्शन रे जदि कोनोसी प्रकार डिस्प्यूट होची किबा कोनोसी डिस्क्रिपेंसी हैला, ताले से सब केस किए करिवो, से सब केस रो जजमेंट केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही देई परिबे, आउ किए भी देई परिबे नाही. ओके, बुझि परछो. से ये होची तमरो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.